Hi students, today we would be discussing about report writing. A report is a short, sharp, concise document which is written in an organized way for a particular purpose and audience. For students, a report is an account of events recorded for the information of others through a newspaper or school magazine. स्टूडेंट्स अगर रिपोर्ट की बात करें, ये शॉर्ट और कॉन्साइज डॉक्यूमेंट रहता है, परंतु एक ऑर्डर के साथ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से इसे प्रेजेंट किया जाता है। और जहाँ तक हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको किसी स्कूल मैगजीन के लिए किसी इवेंट या इंसिडेंट पर रिपोर्टिंग करनी होती है, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। While the basics of any report are the same, there are notable differences between academic, business, and technical reports. What are those notable differences we would be discussing over here? Academic writing. The first thing to note is that academic writing extremely formal. It should be free of contractions and any sort of slang. Academic writing is entirely a formal writing and no any deviation is expected. किसी भी तरह से आप उन रूल्स को हट नहीं सकते, रूल्स को आपको फॉलो करना ही होगा एकेडमिक राइटिंग पे। बिजनेस राइटिंग। Business writing will also take on a formal tone. However, it is allowed to be slightly less buttoned up. The goal in a business report is to present न्यू इनिशिएटिव एंड गेट थिंग्स डन। जहाँ तक बिजनेस राइटिंग की बात करें, फॉर्मल टोन इसका भी रहता है, परंतु थोड़ी सी लेबोरेटरी होती है राइटर के पास, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ किसी एकेडमिक प्रेजेंटेशन को देना नहीं, बल्कि अपने काम को करवाना होता है, व्यापारिक उस इवेंट को अचीव करना होता है। तो दैट्स वाई यहाँ थोड़ी सी हमें लिबर्टी मिल जाती है। एंड द थर्ड वन इज टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल रिपोर्टिंग focus on how to do something, while an academic or even a business report will attempt to prove something. A technical report is more descriptive in nature. यहाँ हमें डिटेल डिस्क्रिप्शंस देनी होती है टेक्निकल रिपोर्ट्स में ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट प्रोसेसेस एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ सम इवेंट। दैट्स वाई टेक्निकल राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मल राइटिंग से यानी एकेडमिक और बिजनेस राइटिंग से थोड़ी सी हटके होती है। की पॉइंट्स। अब रिपोर्टिंग लिखे कैसे, उसके कौन कौन से की पॉइंट्स रहते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट द रिपोर्ट राइटर और द रिपोर्टर शुड हैव एन आइडिया ऑन विच सब्जेक्ट ही इज गोइंग टू राइट ए रिपोर्ट। तो दैट टॉपिक वुड बी टाइटल एज हेडिंग और दैट इज कंसिडर्ड एज हेडिंग। सेकेंड, where the report writer definitely should have an idea where that particular incident or event took place, and the description of that particular venue or the place of happening should be given in the report writing. Third, when the time, date, month, etc. of event, in which month, on which date, at particular time this particular event took place, or in what order the events or different activities of the event took place. That is also important part. How, manner or description of event. This is most important. Entirely the report is the description of the manners in which a particular event took place or was accomplished, or in fact the happening or the description of the happening. It should be in past tense. Generally students events जब रिपोर्टिंग की हम बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स हमारी पास्ट इवेंट पे होती है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी पास्ट टेंस में ही ज़्यादातर होता है। इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक सीक्वेंस रहना चाहिए, एक विशेष ऑर्डर, क्रम इसमें होना अनिवार्य है। एंड शुड बी सिंपल एंड क्लियर। हम थोड़ी इसको और भी डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स कंटिन्यू। कीप इट सिंपल, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, रादर ट्राई टू कम्युनिकेट, कीप sentences short and to the point. In report writing, more focus should be given on communicating the concept or the content what we want to describe, rather putting
some kind of very difficult vocabulary which would be difficult to understand for the audience. So that's why it should be very simple, because we are not only going to impress the person, but we are going to communicate. It should be short and to the point. Use the active voice. Dear students, active voice makes the writing move smoothly and easily. It also uses fewer words than the passive voice and gives impact to the writing by emphasizing the person or thing responsible for an action. Here, we should use in majority of the sentences in active voice because it reduces the length of the report. And mind your grammar. Read the report and correct mistakes. Report, while you have written the report, you should relook it. You should again read it so that you could find out the mistakes and we could remove all those mistakes. That is also mandatory in report writing. What makes an effective report? Clear, concise and accurate. Reporting should be clear, concise and accurate. Easy for the audience reader to understand. As we have already discussed, it should be easy ताकि पढ़ने वाले की समझ आ जाए. थर्ड वन, एप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस रीडर. ऐसा भी होना चाहिए जिस रीडर को टारगेट करके हमने रिपोर्टिंग लिखी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्टूडेंट्स को किसी पिकनिक, किसी इवेंट के एनुअल फंक्शन के ऊपर रिपोर्टिंग लिखा है, तो हमारे जो रीडर होंगे, ऑडियंस होगा, वो पर्टिकुलरली उस इवेंट या उस कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड लोग होंगे. उसमें किसी पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, किसी फिल्म स्टार का इंटरेस्ट नहीं हो सकता. तो दैट्स वाई अपने ऑडियंस को या रीडर को टारगेट करके ही हमें अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग करना होगा. या टेक्निकल रिपोर्टिंग आपने लिखी है, तो टेक्निकल रिपोर्टिंग से किसी साहित्यकार का बहुत बड़ा संबंध नहीं रहता है, तो टेक्नोक्रेट उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो दैट शुड बी रिटन इन दैट वे. एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड विद क्लियर सेक्शन हेडिंग. उसके जो सेक्शंस हैं, हेडिंग्स हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट सेक्शंस को बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई होना चाहिए कि पहले कौन सी चीज़ आएगी, फिर कौन सी आएगी. एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिपोर्टिंग हमें प्रेजेंट करनी है. अब फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग में होते क्या है फॉर्मेट में? सबसे पहले चीज़ है टाइटल सेक्शन. दिस इंक्लूड द नेम ऑफ द रिपोर्टर, प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग. एक तो आपने टाइटल दे दिया, उसके बाद हम जनरली लिखते हैं शिमला 26 नवंबर, हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्टर. आपने न्यूज़पेपर में इस तरह की रीडिंग देखी होगी. तो इसका मतलब ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है या टाइटल सेक्शन है. ये टाइटल सेक्शन है जिसमें आपने टाइटल देना है, रिपोर्टर का नाम देना है, रिपोर्टिंग प्लेस का और डेट मेंशन करनी है. सेकंड आता है इंट्रोडक्शन. द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ रिपोर्ट नीड टू हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. तो इनिशियली वी नीड टू इंट्रोड्यूस कि कौन से इवेंट पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन हमारा इनिशियल होगा. देन बॉडी. दिस बॉडी ऑफ एनी पैराग्राफ एंड इवन ऑफ रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग. देयर नीड टू बी सेवरल सेक्शंस विद ईच हैविंग ए सबटाइटल. आप उसको अलग अलग सबटाइटल्स में डिवाइड कर सकते हो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट लिखा है, और बॉडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. देन वी हैव ऑर्डर. Information is arranged in order of importance or happenings of activity of the event. एक क्रम होना चाहिए. जो फर्स्ट इवेंट्स हुआ है, उस फर्स्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसे पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा. आप ये नहीं कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर इवेंट और द एनुअल फंक्शन वॉज इनोग्रेटेड एट 10 o'clock. उसके बाद आपने लिख दिया इट वॉज क्लोज्ड एट 4 o'clock एंड दे टुक लंच एट 1 o'clock, या देयर वॉज अ लंच ब्रेक एट 1 o'clock. तो आपको लंच ब्रेक अगर पहले आई है तो ऑब्वियसली इनोग्रेशन के बाद वो लंच ब्रेक का रेफरेंस आएगा, तब आप उसे कंक्लूड करोगे. तो एक सीक्वेंस होना चाहिए, मैंडेटरी है. कंक्लूजन. दिस इज वेयर एवरीथिंग कम्स टुगेदर. तो कंक्लूजन पे हम लोग का हमेशा फोकस रहता है कि रिपोर्टिंग में भी एक निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए, कंक्लूजन निकलना चाहिए कि हमने पूरी रिपोर्टिंग को कैसे ब्रीफ किया, ताकि वहीं से हमें पूरी रिपोर्टिंग का आइडिया लागू हो जाए, आइडिया हमें लग जाए. अब हम फर्स्ट रिपोर्टिंग. Hi students, you might have seen that we used to celebrate different days, different functions in our schools. So, report writing of different activities and the functions of the school is one of the major questions which generally comes in your exams. Today, we would be discussing our two such functions. Number one, annual day celebrated in a particular school.
Here I have given mention of my own institution. Annual Day celebrated at GSSS Naharadhar. Government Senior Secondary School Naharadhar celebrated its annual day with unprecedented fanfare on October 10, 2020 in School Hall. The school was decorated elegantly. Mr. Mohanlal Azad, the Additional Director Higher Education, had been invited as the chief guest. He was given a floral welcome before he inaugurated the program. The talented students presented mesmerizing cultural program. Mr. Surendra Kumar, the principal, read the annual report of the school. Prizes were given away to the toppers and other students who had brought laurels to the school in various competitions and contests. Addressing on the occasion, Mr. Mohanlal Azad lauded and praised the school for raising the educational standard in the locality. At the end, Mr. Guman Chauhan, the SMC president, thanked the chief guest, dignitaries, and parents for having spared their time to attend the function. He also thanked students, teachers, and the principal for organizing the function successfully. Dear students, if you want to make certain changes in this particular report, you can do so, because sometimes a particular name of the school is already given to you in the question. So here you can modify the things. For example, Government Senior Secondary School, here you can mention the name of the school concerned which is asked in your exam question paper. Similarly, the chief guest you can replace, the date of the function you can replace. Accordingly, you can make certain other modifications, like the person who thanked, he could be senior most teacher of the school, he could even be the principal of the school. These are the different things which you can do, you can modify your report. The second report, blood donation camp. A blood donation camp was organized in our school on last Sunday. It was held in the school hall. A team of doctors and nurses from the local government hospital had reached in time. The chief guest of the camp was the SDM of the city. The school staff and students participated in the camp. The blood donation camp continued till 3 p.m. I also donated one bottle of blood. After that, the chief guest delivered the speech appreciating those who had donated blood. He told the audience that the donated blood would be used for saving the lives of the injured and the sick. One of the doctors also addressed the audience, saying that the recovery takes place very soon. He also shared blood groups related information. The SDM also handed over the certificates to the blood donors. It was followed by a cultural program. The students of our school presented the cultural items. The blood donation camp ended with national anthem. It was certainly a memorable day for me. I, along with other people, decided to donate blood in future also. This is the report of blood donation camp. Here also you can modify the things if you want to modify accordingly. That's all for today.